Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 12 and it is the third part of this chapter. Today topic is nomenclature of substitute benzene compounds. For IUPAC nomenclature of the substitute benzene compounds, the substitute is placed as prefix to the word benzene as shown in the following examples. For the example, the first is मिथाइल बेंजीन. बेंजीन रिंग पे जब बेटा CH3 अटैच होता है यानी कि मैथिल ग्रुप अटैच है तो हम उसे मैथिल बेंजीन के नाम से जानते हैं. नाउ यदि बेंजीन रिंग के ऊपर OMe अटैच है तो हम उसे मिथॉक्सी बेंजीन के नाम से जानते हैं. और यदि NH2 ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है तो हम उसे अमाइनो बेंजीन के नाम से जानते हैं, अमीनो बेंजीन के नाम से जानते हैं. और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, एनिलीन होता है. नाउ यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है तो हम उसे नाइट्रो बेंजीन के नाम से जानते हैं. और यदि बेंजीन के ऊपर Br ब्रोमो ग्रुप अटैच है तो हम उसे ब्रोमो बेंजीन के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इफ बेंजीन रिंग इज distributed, the position of the substituent is defined by numbering the carbon atoms of the ring such that the substituents are located at the lowest numbers possible. So here benzene ring attach है, बेंजीन रिंग पे जो ब्रोमीन है वो अटैच है. तो यहाँ पर देखिए हमने उसकी पोजीशन को बताया है. जैसे 2 बेंजीन जो है वो अटैच है तो फर्स्ट जहाँ पर फर्स्ट बेंजीन होगी वहाँ से हम उसे काउंट करना शुरू करेंगे. जो ब्रोमो ग्रुप यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा तो फर्स्ट पोजीशन हम उसकी लेंगे जहाँ से वो फर्स्ट अटैच हुआ है, वहाँ पे हमने उसको फर्स्ट नंबर दिया है. नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप ऐड है, वहाँ पर हमने उसे सेकंड नंबर दिया है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन. ठीक है, इससे नाम से मालूम चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के ऊपर जो ब्रोमीन है वो अटैच है. बिकॉज ऑफ 2 बेंजीन है इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया है, डाई ब्रोमो नेम लिया है. नाउ द नेक्स्ट इज अब पोजीशन कौन सी है बेटे, थर्ड पोजीशन पे है तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे होने पर फर्स्ट 4 डाई ब्रोमो बेंजीन. इन द travel systems of the nomenclature, the terms ortho, meta and the para are used as the prefixes to indicate the relative position 1,2, 1,3 and 1,4 respectively. So हम इनकी जो पोजीशन होती है वो स्टार्टिंग के अंदर उसे बताते हैं. Now the next topic is isomers. Isomers is divided into the 2 main parts. The first is structural isomers and the second is stereoisomers. Structural isomers divided into 4 main parts: chain, position, functional group and the metamerism. And the stereoisomers is divided into the 2 main parts is the geometrical and the optical. Now the first is structural isomers. The first is chain isomer. When 2 or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to as chain isomers and the phenomena is termed as the चेन आइसोमर्स. एग्जाम्पल है C6H12. यदि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी संख्या सब कुछ सिमिलर हो लेकिन जो स्केलेटन हो कार्बन का यदि वो डिफरेंट है तो हम इसे चेन आइसोमर्स के नाम से जानते हैं. फॉर द एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH3 इज अ पैंटीन. एंड द नेक्स्ट जो हमने इसका नेक्स्ट आइसोमर्स है उसका नेम है आइसोपेंटेन, द 2 मिथाइल ब्यूटेन. एंड द थर्ड इज नियोपेंटेन and the main name is 2,2-dimethyl propane. Now the next is position isomers. When 2 or more compounds differ in the position of substituents, atoms or functional group on the carbon skeleton, they are called position isomers and this phenomena is termed as the position isomers. Example C3H8O. सो हियर प्रोपेन 1-ol और प्रोपेन 2-ol. तो जो OH है वो किस पोजीशन पे किस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर उसका आइसोमर्स देखा है.
Now the next is functional group isomers. Two or more compounds having the same molecular formula but different functional group are called the functional isomers, and this phenomena is termed as the functional group isomers. For the example, C3H6O. So here the first member is propanone and the second is propanol. सो यह जो फंक्शनल ग्रुप है बेटे वो चेंज हो गया है. पहले फंक्शनल ग्रुप O है एंड द सेकंड के अंदर जो H है वो CH2 पे जाकर अटैच हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो गया है. नाउ मेटामेरिज्म इट अराइज ड्यू टू अ डिफरेंट एल्काइल चेन्स ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर इस तरह के आइसोमर्स के अंदर हमें डिफरेंट एल्काइल चेन देखने को मिलती हैं. For the example, methoxypropane CH3O C3H7 and ethoxyethane is a C2H5O C2H5. Now the next is stereoisomers, the compound that have the same constitutions and the sequence of the covalent bond but differ in relative position of their atoms or groups in the space are called the stereoisomers. This special types of isomers is called as the stereoisomers and can be classified as geometrical and the optical isomers. Now the next is fundamental concept of the organic reaction mechanism. अब कौन कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे. इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन the organic molecules also referred as a substrate and the reacts with and the appropriate attacking reagent and the leads to the formation of one or more intermediate and the finally product. The general reaction is depicted as the follows. The organic molecules is a substance, attacking reagent एंड इंटरमीडिएट जो पोजीशन है उसके बारे में बताएंगे जिसे हमने बाय प्रोडक्ट नाम दिया है एंड द इन द फाइनल वी आर गेटिंग प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है. नाउ द नेक्स्ट इज substrate that the reactant which supplies carbon to the new bond and the other reactant is called the reagent. If both the reactants supply carbon to the new bond, then choice is arbitrary and in this case the molecule on which attention is focused is called the substrate. Reaction mechanism, a sequential account of each step describing details of the electron movement energetic during bond cleavage and the bond formation and the reacts of the transformation of reactant also protects kinetic is the referred as the reaction mechanism. Now fission of a covalent bond, the cleavage of the covalent bonds are heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage, the bond breaks in such a fission and the spread pairs of the electron remains with the one of the fragments. The one atom has a sextate electronic structure and a positive charge, the other a valence octet with at least one lone pair and the negative charges. Now CH3 in CH3 carbon in a position the positive form and the Br in a negative as shown below. CH3 Br. Now CH3 is in a positive ion and the Br in a negative ion. A species have a carbon atom possesses a sextant of electron and a positive charge is called a carbocation. The observed order of the carbocation stability is CH3 is lower than CH3CH2. CH3CH2 is lower than CH3 whole twice 2CH and it is lower than CH3 whole twice 3C plus ion. The organic reaction which proceeds through heterolytic bond cleavage are called the ionic and the heteropolar or just polar reaction. Now homolytic cleavage. In homolytic cleavage, one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom. Thus is the homolytic cleavage. The movement of a single electron take place instead of an electron pair.
Now, such cleavage result in the formation of the neutral species which contain an unpaired electron. These species are called the free radical. A homolytic cleavage can be shown as Rx, now heat or light when contacted, then R alkyl free radical, and X. Organic reaction which processed by homolytic fission are called the free radical or homopolar or non-polar reactions. Now the next is nucleophiles and the electrophiles. The nucleophiles are reagent that brings an electron pair nucleus seeking, and the reaction is then called the nucleophilic. Electrophilic, a reagent that take away an electron pair electron seeking, and the reaction is called the electrophilic reaction. During a polar organic reaction, a nucleophilic attacks and the electrophilic center of the substrate, which is that the specific atom or part of the electrophile that is electron deficient. Similarly, the electrophiles attack a nucleophile center, which is the electron rich center of the substrate. Now, electron movement in an organic reaction, the movement of the electron in organic reaction can be shown by the curved arrow notation. The presentation of shifting of electron pair is given below. Here the double bond Y have double bond, now single bond, और यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही है, बॉन्ड शिफ्ट हो रही है फ्रॉम पाई बॉन्ड टू द एजेंस बॉन्ड पोजीशन. इन द नेक्स्ट form pi bond to adjacent atom, and in the third form atom to adjacent the bond position. Now movement of single electron is indicated by a single barbed fish hooks half-headed curved arrow. Electron displacement effect in a covalent bond. The electron displacement in an organic molecule may take place either in the ground state under the influences of an atom or a substituent group, or in the presence of an appropriate attacking reagent. Examples of this type of the electron displacement are the resonance effect and the inductive effect. Now the first is resonance structure. A single Lewis structure cannot explain all the property of the molecules. केवल एक single Lewis structure जो होगा बेटे वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को, मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो आर प्रोसेस अ सम मॉलिक्यूल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज. इसीलिए हम कुछ और मॉलिक्यूल्स का, कुछ और स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं उसकी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए. डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर प्रपोज आर कॉल्ड एज अ रेजोनेंस लुईस स्ट्रक्चर और canonical form of the contributing structure. The phenomena is called the resonance and the structure process are called the resonance structure. Now the resonance structure are hypothetical and the individual do not represent any real molecule. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance establishing energy or simply the resonance energy. The following rules are applied while writing resonance structure. The resonance structure have the same position of nuclei, and the second is the same number of the unpaired electron. Now the resonance effect. The resonance effect is defined as a polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair of the electron present on an adjacent atom. तो pi bonds के बीच के अंदर हमें जो resonance effect है वो देखने को मिलता है. There are two types of the resonance effect, positive resonance and negative resonance effect. In the positive resonance effect, this effect transfer the electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugate system. In the negative resonance, this effect observed when the transfer of the electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugated system. Now the next is inductive effect, and this part I will be explained the next part of this chapter. Thank you very much, students.